teacher 1 fast preaching. हेलो। हाँ, ये सही दिख रहा है। क्या ठीक है? हाँ अच्छा दिख रहा है। ठीक दिख रहा है? पहले नहीं दिख रहा था ना, हाँ इसलिए। हाँ अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है। सब शुरू करते हैं ठीक। अब ठीक दिख रहा है, पहले नहीं। कर। Evening chanting, page 14. योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो साधकसङ्घो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गम् इमे हि सकारि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ति भगवा शुचिरपरिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनता नुकम्पमानसा इमे सकारे दुगतपणाकारभूते पटिगणातु अम्हाकं हिताय सुखाय अर्हं सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घम् आनन्दमयं बुद्धस्य भगवतो उग्भाग्नमकारं करोमसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य
सतिनयं करोमसि तं कोपन भगवन्तम् एवं कल्याणो कीर्तिसदो अभुगतो इति पिसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि सत्तादिव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति अन्धमयं बुद्धाभिगीतिं करोमसे बुद्धवारहन्तवरता द्विगुणाभियुतो शुद्धाभियानकरुणा निसमागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दम् बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं हेमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धस्सस्मि दासीव बुद्धो मे सामिकेश्वरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीयं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुदितं नत्ति मे शरणम् अन्यत् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानाय यं पुण्यं प्रसुतम् इद सभ्येऽपि अन्तरायामि सुन्तस्य तेजसा अन्धमयं धम्मानुसतिनयं करोमसे स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहीति अन्धमयं धम्माभिगीतिं करोमसे स्वाखाततादिगुणयुगवसेन सेयो यो मग्गपाकपरियतिविमोकभेदो धम्मो कुलोकपतन तदधारि वन्दामहं तमरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं हेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणं धम्मस्सास्मि दासीव धम्मो मे सामिकेश्वरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीयं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतम् मे शरणम् अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानाय यं पुण्यं प्रसुतम् इद
Sabbepi antarayami mahe sumta satejasa. Handmayam sanghanusatinayam karomasi supatipanno bhagavato savak sangho ujupatipanno bhagavato savak sangho nyayapatipanno bhagavato savak sangho सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुष पुद्गला एष भगवतो सावक संगो आहुने पाहुने यो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकसाति हन्तमयं संगाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अट्टविदो अरियपुगलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरा सयकाय चेतो वन्दामहं तमरियगणं सुशुद्धं सङ्गो यो सबपाणिनं शरणं हेममुत्तमम् ततीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहं सङ्घस्स्मिदासीव सङ्गो मे सामिकेश्वरो सङ्घसहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्त्यहं चरिष्यामि संगसोपटिपन्नतं नत्थि मे शरणम् अन्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं चतुशासने संगं मे वन्दमानाय यं पुण्यं पशुतं इड सभेऽपि अन्तरायामि नाहे सुतस्य तेजसा हम रतन सूत्र का पाठ करेंगे। चैंटिंग बुक में थोड़ा कम है, शायद मैंने पीडीएफ भेजा था इसका। नमो
තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යානිධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි වායා නිවේ අන්තලික්ඛේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝ චරන්ති ඒ බලෙන් තස්මාහිනේ රක්ඛත අප්පමත්තා යං කිංචි විත්තං ඉදවා පුරං වා සග්ගේ සුවායං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු khයං විරාගං අමෙතං පනීතං යදජ්ජ ගාසක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යං බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තයිකඤ්ඤ මාහෝ සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලාට්ඨ සතම්ප සත්තා චත්තාරියේතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස සාවකා ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි තේ පත්ති
සත්තා අමතං විඝයිහ ලද්දා මුධා නිබ්බුතින් භුඤ්ජමා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේභි අසම්පඛම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්ඡානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්ඡානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්ප මත්තා නතේ භවං අට්ඨ මං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වා පියදස්සි කිංචි චතෝ අපායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාභිඨානානි අබබ්බෝකාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අභබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අභබ්බතාදිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්ප ගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්හි තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේ
ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයති කේ භවස්මින් තේකීන බීජා අවිරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යතා යම්පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යානිධ භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිවේ අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු. යානිධ භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිවේ අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු. යානිධ භූතානි සමාගතානි ආනිවායා නිවේ අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු. ඒතේන සච්ච වච්චේන දුක්ඛා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වච්චේන භයා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වච්චේන රෝගා උපසමින්තුතේ. Now listen to the Deshna. Behind the thought is the silence. So listening is open ability to just listen, not for any particular sound or an object, but this open kind of perspective, allowing things to be what they are as we listen. We hear the crickets, the air conditioning, the silence. The nature of consciousness is silent, peaceful. So in some of my teachings I refer to the sound of silence.
the silent sound, which is, of course, the sound. Is it a sound, or is it just natural stillness, silence? So we're not looking for a sound or anything, or for silence. It's not about, trying to find it as an object, but learning to kind of trust in awareness, a kind of relaxed sense of being here, which includes everything. It's not discriminating, choosing any particular thing. It's awareness of thinking. Like the thinking process is an object of consciousness. Rather than making thinking the subject of your life, which we tend to do, we see ourselves through the memories that we have, through habits. We create ourselves as a separate person, an ego. But you can be aware of thinking as an object. And behind each thought is the silence, emptiness, peacefulness. The thoughts come and go. They arouse emotions. We think of things of the past, or imagine the future. We create emotions with our thoughts. So the thoughts are also observed. They're objects of observation. So it's not only the sensory objects, what we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we touch. It's also what we think and feel. Because this realm is a sense realm. When you reflect on it, the world that we live in, the bodies that we experience, that we're experiencing now, are all about sensitivity. Pleasure, pain, neutral sensitivity. And sensitivity, sense, is also an object of mindfulness. We're not bound into sensitive forms that just kind of helpless victims of the sense realm, but we can also witness it, be aware of it, recognize that sensitivity is impermanent. So we have this ability to perceive, to feel, to sense, to think. And these are all sankharas, all conditions. And then the unconditioned is the awareness of them. So like getting to the root cause, they say, yoniso manasikara, getting to the root of the problem. So it's like inquiring into the way it is. It's investigation. And the Puto is a kind of reminder. The mantra Puto is a reminder of being this witnessing presence. Not as a person making judgments, value judgments about what you're witnessing, but being the Uto, the wise knower. All conditions are impermanent. Sape sankhara anicca.
So our refuge is in this awareness. But don't think of it as a kind of some personal refuge. It is what we truly are. Awareness itself is our true nature. It doesn't change. It isn't dependent upon conditions. It's the one constant factor that we recognize. It's not a becoming like that way, but recognizing that's stability, that's doesn't change. This kind of awareness, this conscious listening, embracing the present as it is. Now, in terms of the second noble truth, the desire, three kinds of desire, kama danha, bhava danha, vipava danha, getting to know, before you can really let go of desire, you have to know desire, recognize what it is. It's a sankhara, it comes and goes, it's not a kind of permanent condition. We might see it as kind of personal problems, relate to it in judgmental terms, good desires, bad desires, my desires. But refrain from reflecting in that, using the personal pronouns or possessive ones like my desires. Because now we're refuge in awareness in Bhutto Dhammo Sangho, the Buddha Dhamma Sangha. So desire then is to be recognized, to be observed, to notice, to be an expert, to know, through investigation, not through belief. Not because it's the second noble truth, but because the second noble truth is an encouragement to investigate sensual desire, desire for becoming, desire for annihilation. And the realm we're experiencing through this form, physical form, through the senses, is a desire realm. So it's not about getting rid of desire. We can't do that. It's not an annihilation of desire or a suppressing of it, but a recognition. Kama danha, sensual desires like this. Bhava danha, desire for becoming, getting something you don't have. Self-improvement, trying to get enlightened, bhava danha. So in the ego level, we think, I'm not good enough the way I am. I've got some missing things, I feel lack, I feel I suffer. I've got to get something I don't have, such as enlightenment. So this is an investigation, like thinking like this, listening to how you create yourself as somebody who lacks something, something wrong, something incomplete, something amiss that we've got to make right, and by getting something that we imagine. So this is like thinking, and when you think like this, you're listening to yourself thinking, it's not to believe the thoughts themselves, but to make it manifest, this bhava danha. You've got this feeling that the ego has, that we've got to get something that we lack. We're missing something. Then the vipava danha, the third
desire to get rid of, wanting to get rid of unpleasant moods, thoughts, memories, habits. It's a desire to annihilate, to destroy. And so you want to get rid of, like people feel, have problems with anger. Anger is a very strong kind of primal emotion for all of us. Anger and aversion. And the ideal, is we shouldn't be angry, we should have loving kindness and the desire to become a saint or some kind of sage or ideal person that doesn't get angry is bhava dhanha. Desire to get rid of anger is vipava dhanha. So anger, it's a part of the condition that it's a kind of what I call a primal emotion, like sexual desire and aversion, anger, hatred. These forms, these physical bodies are born into a sense realm to procreate the species, for self-preservation, for survival. Anger and aversion is a survival mechanism. Sexual desire is a natural condition for procreating the species. We have fear, which is another survival emotion, because there's a lot to be afraid of as a physical being, as an independent, separate person with a physical body, frail bodies that we have. So these are, seen as we tend to take them personally. My anger, my sexual desires, my fears, how we use this possessive pronoun, my problems. So there's encouragement to kind of refrain from always using these possessive pronouns, personal pronouns. Because there is anger is like this, sexual desire is like this, fear is like this. See, you're recognizing it, you're allowing it to be what it is, being patient with it, allowing when it manifests, when it arises, being patient, letting it go, not attaching to it, then you'll see it happen. All these emotions cease. In the silence of consciousness, in the peace of consciousness, they dissolve, they disintegrate when we let them be. When we're always resisting, fighting, identifying them as personal problems, then we tend to reinforce the karma that we have with these emotions. Like the species, we're a mammalian species, we're mammals. Animal forms, the human form. It's like the animal kingdom, procreating the species. Why are dogs and cats, pigs, cattle, quail, horses? The very nature is to procreate their species and to survive. Survival mechanisms to live in this world where there's dangers, lot of fear, where animals, we're all eating other animals. So the survival of the fittest, the law of the jungle.
fear is a primal emotion, and then seeing that not as my problem. I have a problem with fear, but fear is like this. When you feel that emotion arise, there's the noise, you're mindful of it. Then the reaction to it out of heedlessness is to try to run away from it, get rid of it, annihilate it. That's Vipavadana, desire to annihilate something you don't want. In terms of the advantage of our human birth is that we can make moral agreements, like the 5 precepts in Theravada Buddhism. These are agreements that we make as a society of human beings to refrain from intentionally killing another human being. The second one, to not steal or take things that don't belong to us. The third, about proper sexual behavior, not to exploit others sexually or misuse this energy that our bodies have. It's agreement not to do this, to do these things. The fourth one is about speech, to be responsible for what we say. So when we talk to each other, when we try, not to use speech like cursing, swearing, abusing, insulting, intentionally offending people, lying to people, so these are guidelines for action and speech. The fifth, to refrain from getting addicted to alcoholic beverages or drugs, where we lose this sense of mindfulness. We get carried away with different states of mind in which we can kill, steal, lie, cheat, and so forth. So the animal kingdom can't come to agreements on moral behavior. That's something you can't ask the tigers and lions, elephants, dogs and cats to take the 5 precepts. But society has, all societies of human beings have got moral agreements about behavior. And so this is a gift we have as human beings with these animal bodies, with these intense emotions and urges, natural reactions that are part of the nature of the species. But we can be aware of that. So awareness is like what they call Buddha nature, or it's the word Buddha is the ability we have to reflect on the way things are, to investigate reality, not to just be subjected to instinctual habits and operate only from survival mechanisms and instinctual behavior. We have all that, but we also have this ability to reflect. And so, like the Four Noble Truths are directional signs to reflect, to investigate the reality of our experience.
So the personal pronouns, we make sexual desire very personal. In the modern media, everybody's talking about their sexual inclinations, their sexual problems. So it's everything sexual is becoming highly individual and personal. So we have moral attitudes towards sexual behaviors that vary according to religions or cultures. But it is a strong natural energy. It's part of this realm that we are born into as human beings. Now in the monastic form, it's a celibate form, so we vow not to act on sexual energies that we all experience, act or speak on them. But we have to be aware of them and see them not in terms of personal problems, but as sankharas arising and ceasing. Anger and aversion. So say the monastic form of the Vinaya is a kind of moral, ethical agreements, precepts. They're precepts. They're not commandments by God. They're precepts, agreement, polite ways of behavior, kind of etiquette and social agreements as Buddhist monks. We have this 227 recitation every fortnight, the Patimokkha. So this is about action and speech. To live within the restraint of these precepts, but to not just be identified with the precepts as kind of and make it personal and tyrannical, but to use the precepts as a way to reflect from when we have these urges to just speak in anger or want to feel revengeful or jealous or frightened. We can strike out with our speech or our physical action, but we refrain from doing it. But we're aware that jealousy and fear and anger and desire for revenge, these are all kind of human reactions. But to see them from the Bhutto position rather than the judgmental, these are my problems, then we have to go to psychoanalysts and take therapy and trying to deal with, how I can make myself better, how I can deal with my anger and my resentments and my greed. So we reinforce this sense that all these are personal. They're mine, and some of them, they're all what we want to get rid of or change to become something else, a better person, kinder person, to be one who's brave and not afraid, and so forth. So this is all about thinking, creating thoughts, ideals about what we'd like to be, and the critical mind saying, condemning for what we shouldn't be. We shouldn't be weak or cowardly or frightened. We should be brave and strong. We should be kind, full of loving kindness. We shouldn't feel jealous and envious and mean-hearted. And so the ideals
are one thing. They're created, like I was saying before, ideals are created by us through thinking. You can create the finest possible ideal through thinking in superlative terms. The best, the kindest, the most beautiful, the most generous, the most compassionate. So we create, ideals of God as some kind of being in the universe that is perfect. Because you can create with this superlative ability to, using superlatives to think, to create the best. We all know how we should be as ideals, or how the government should be as a democracy. We all know how each other, how men should be, how women should be, in terms of ideals, thoughts. But as I've said before, ideals don't feel, they're not sensitive. They're perfect in they reach that ultimate state of the best, the very best, but they don't feel anything. And so recognize that our life, our existence is all about feeling. These forms, these bodies are not ideal forms. They're very sensitive forms, subject to so many other conditions affecting them, whether it's hot or cold, hungry, thirsty, young or old, male or female, the endless succession of experiences that don't fit into the ideal, but they're the reality of experience, the way we are. This human existence, this form is like this. If we compare it to an ideal, then you're always going to feel that you're imperfect. So you have an ideal for what a man should be, or a woman should be, and what a mother, the perfect mother, or the perfect father. You can create ideals, and then the realities of your experience as a mother or a father is like this. So it's this ability to reflect in its way. You begin to understand, to have metta. We have metta for ourselves, ahang sakito homi, may I be well. Not to, say, try to become perfect as a person or an individual, but to recognize that the physical body, the conditions that we're experiencing are not self. They're not what we are. They're not mine, me or mine, you or yours. They are sankharas, so they arise and cease. That's what they're supposed to do. Sensitivity implies pleasant, unpleasant sensation, where on the desire level we only want pleasant sensations. We like everything to be pleasant, beautiful, harmonious, peaceful. The ideal society where everybody's equal, everybody keeps the precepts. Democracy or communism, socialism, all these ideal political philosophies are based on ideas of perfection. So as much as we, the ideal of the time is democracy, which is an ideal, beautiful ideal.
but without wisdom, then we're always going to be upset, because democracy is an ideal. It's not the way things are. We have to deal with inequality, with changes that are beyond our control, with individual idiosyncrasies of unpredictable situations, uncontrollable incidences and so forth, where people aren't acting the way they should, or life isn't the way it should be according to the ideal democratic attachment. So democracy, I'm not condemning it, because I'm just pointing out it is an ideal. It's like a guiding star. It's high above us. Equality and fairness and justice. Everybody keeping the precepts. Everybody responsible for their speech and action. Where there's, the ideal where we're all quite equal and there's no kind of rich or poor. Everybody is the same. That's an ideal. And that's a creation through the thinking process. When we always look to ideals, we can only complain about life, complain about ourselves or others, the family, the people we live with, the society we're in. Because there's no ideal society, no ideal person. So like in terms of Dhamma, the way things are, all conditions are impermanent. And that's not an ideal. That's not the way things should be, that's the way they are, under all conditions. Greed, hatred, and delusion are impermanent. They arise and they cease according to other conditions. When we see ourselves according to the critical mind, then we do see faults, weaknesses, flaws, things we're ashamed of, secrets that we don't want anyone to know about, fear of what others think, self-consciousness, worry about the future, anxiety. These kind of haunt our conscious experience of life, because the future is unknown. We can imagine anything in the future. The past is a memory. So that's gone by, whatever you've done or said in the past, it comes into the present as a memory, and that is anicca, dukkha, anatta. Memories are not kind of permanent conditions that reside inside us, that linger and lurk inside our bodies or minds. They arise and cease, they're empty phenomena. So it's like listening to desire. That which is aware of sensual desire is not sensual desire. So desire through the senses arises and ceases according to conditions. But mindfulness is not sankhara, so it doesn't arise and cease according to conditions. So whatever happens to you, whatever experiences you have during the day or night, you're aware of them. How you interpret them through the self-view, through the identity as a separate, independent personality,
separate physical being from everyone else, then we create fears and endless problems, because there is a lot to fear in terms of the, if we are just this limited form, this physical form, it's easily damaged. Emotionally, we're very sensitive, so we can be easily offended or upset. Somebody look at us with crossed eyes or give us a dirty look, we can be upset the whole day. Somebody says something that we feel insulted or offended by, we're easily hurt, easily offended. We're sensitive in this way. What others, how they look at us, how they speak to us, as well as how we react to life, to other people, to the families we live in or the society we live in. So this is what sensitivity is about. But awareness is aware of sensitivity. You can't offend awareness, consciousness. You can't, no matter whether what you think of it or believe it to be, it's never offended. It's perfect, stainless, peaceful. So then, this is the encouragement to take our stand with awareness, because that's what we really are, as we begin to see what we're not. Sape Dhamma Anatta, all Dhamma is not self. You can't find, the sense of a separate self, that me and mine, my anger, my greed. You can't find any permanent separate self. And yet these thoughts, these emotions, these feelings arise and cease. Where do they come from? Where do they come? If there's only Dhamma, then how do greed, hatred, and delusion, where do they come from? And so this is the great mystery, the great question that can be very interesting to reflect from. Because there's only Dhamma, then how could there be, which we call peaceful, then something like anger and hatred, jealousy and fear are not peaceful? Do they come out of thin air? So in terms of chant, like we have kusala dhamma, piya kata dhamma. So in terms of Dhamma, these are conditions like waves on the ocean. They're conscious forms. They come from awareness, they come from consciousness, from the Dhamma, but they arise and cease. So they're merely the surface conditions that we identify with, where Dhamma, in terms of a refuge, isn't taking refuge in greed, hatred, and delusion that arise and cease, but in the Amatta Dhamma, the very nature of consciousness, the complete, perfect conscious reality that we truly are, rather than these
momentary waves and tsunamis and typhoons and whirlpools that we experience through the sensory, through the senses, through the forms that we are experiencing at this time. So that's why these dhammas that arise and cease are not self. But we think they are, like a wave thinking that it's the ocean, thinking it's independent, when it's merely just another movement on the water. So like the emotions that we experience, the thoughts that we have are like motions on consciousness. They're changing, unstable, insecure. That's their very nature. And the Sakya Ditti, the self-view, is if we bind ourselves to these insubstantial conditions and suffer from it. So that's the cause of suffering. This ignorant, blind attachment to kama-dhanna, bhava-dhanna, vibhava-dhanna. So the Buddha, in his compassion after enlightenment, he gave us this teaching of the Four Noble Truths to realize Nirodha, Third Noble Truth, the end of suffering. It isn't getting rid of the waves on the ocean or the conditions that arise and cease, but it's not making problems about them, not believing that they're something more than just a temporary changing movement. Because our true nature isn't just a momentary condition that arises and ceases according to other conditions. We're realizing the true nature of the amatta Dhamma, the deathless Dhamma, ultimate reality, whatever you want to call it. And then in terms of words like vinyanang, anidasanang, anantang, sapadopamang, consciousness invisible, vinyanang, consciousness invisible, infinite, no boundary. Try to imagine no boundary. So the thinking mind always has boundaries, it has qualities, conditions. Vinyanang anidasanang anantang sappado-pamang. Luminous all around. So the nature of consciousness is light, luminosity. It's deathless, amatta, not subject to beginning or ending, birth or death. And our recognition of this on this retreat is this kind of effort to convey the profundity of this teaching so that you can investigate for yourself. Now I'm not expecting you to believe everything I say. What I say is merely attempt to encourage you to investigate, to have the inspiration and the right. You're given the right to investigate reality, your life as you experience it. Not to see it in personal terms anymore, personal and critical terms, according to ideals that you might hold to, but through these Dhamma teachings, which are about apparent here and now, timeless,
encouraging investigation, leading inwards to be realized by wisdom, through wisdom. So this morning, this occasion to reflect संक्षेप में इसका सारांश दिखाते हैं हिंदी में। तो हमने शुरू किया साइलेंस से कि जो भी हम विचार करते हैं, विचार उठते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो बैकग्राउंड उन सबकी साइलेंस में रहती है, जो कि जो प्योर अवेयरनेस है उसका नेचर भी वही है, साइलेंस का, पीसफुलनेस का। तो जो विचार आते हैं उनको भी कॉन्शियसनेस का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हम उनको भी जान सकते हैं। जैसे बाकी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह से मन के भी ऑब्जेक्ट जो है विचार है, और उसको भी ऑब्जेक्ट की तरह हम जान सकते हैं, किस तरह के विचार उठ रहे हैं, कैसे इमोशन हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं। और जो हमारे सेंसिटिव शरीर है हमारा, उसकी भी सेंसिटिविटी को भी हम पहचान सकते हैं, कैसी वेदना हो रही है, वो भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अवेयरनेस का। तो उन्होंने कहा कि हमको योनिसो मनसिकार का अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें कि जो चीज़ें हैं कैसी हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसके रूट तक जाएं। और जो एक शब्द इस्तेमाल किया था बुद्धो या अवेयरनेस का, वो हमको सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए है कि हम ध्यान से, समझदारी से देखें कि क्या हो रहा है, अवेकन्ड अवेयरनेस बनाएं। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हमें अवेयरनेस के अपनी रिफ्यूज बनाने चाहिए, ना कि अपने पर्सनल समझ को। तो इस जब अवेयरनेस से हम बस चीज़ों को देखते हैं जो अवेयरनेस में उत्पन्न होती हैं, तो जानते हैं कि सारी जो कंडीशंस हैं सब बदलती रहती हैं, उससे हम जान जाते हैं। और तृष्णाएँ जब जागती हैं, जो दुख का कारण है, उनको भी जानते हैं कि काम तृष्णा है कि भाव तृष्णा है कि विभव तृष्णा है। इन्वेस्टिगेट करेंगे तो सब मालूम पड़ जाता है। लेकिन अगर हम अपने को उसको पर्सनली लेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाती है। फिर हम ये लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारे में ये कमी है, ये हमारी गुस्सा बहुत आता है, वासना बहुत है, इसको कम करना है, इसको हटाना है। तो भाव तृष्णा विभव तृष्णा के बीच में दौड़ते रहते हैं। समझना चाहिए कि कई चीज़ें जैसे गुस्सा है, वासना है, भय है, ये प्राइमरी इमोशंस हैं हमारे, जो सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, जिस कारण से हम जब मनुष्य जानवरों से हमारी इवोल्यूशन हुआ है, तो एक एनिमल इंस्टिक्ट है सर्वाइवल का, जो हमारे साथ चला हुआ जा रहा है। बस ये ह्यूमन बर्थ का ये एडवांटेज है कि हम उसको देख सकते हैं और उसको अपने वश में कर सकते हैं, और नॉन रिएक्टिविटी ना करके समझदारी से एक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो 5 जो प्रिसेप्ट्स हैं, शील हैं, वो भी ह्यूमन डोमेन में ही हो सकता है कि हम सब एक तरह का मॉरल एग्रीमेंट है हमारा कि हम आपस में इस तरह से व्यवहार करेंगे, जो पशु नहीं कर सकते। ये मनुष्य होने का एक गिफ्ट है हमारे को, जिसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए अवेयरनेस के साथ। और जो हमारे विकार जागते हैं उनको इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही उनको पर्सनली लेना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन अराइजिंग होती है, और जिसकी अराइजिंग होगी वो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अगर हम उलझेंगे तो निकलेगा नहीं, फिर हमको ज़्यादा दुख देता है। और आइडियल्स के बारे में आपने कहा कि कई बार हम आइडियल्स बना लेते हैं, हमको ऐसा होना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, हमेशा मैत्री होनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे में मुदिता होनी। तो इस तरह के आइडियल बना लेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम फिर आत्मभाव में फंस जाते हैं। चीज़ें परिस्थितियों के वश उत्पाद होती हैं, और परिस्थितियों के वश ही वह हो जाता है। इसलिए हर परिस्थिति
उस भाव से देखेंगे पादवय धम्मिनो, तो समझ जाएंगे कि सारे संस्कार वैसे ही हैं, किसी को भी अपना मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाम का यहाँ कोई चीज़ है नहीं। कई आइडियल बहुत अच्छे भी लगते हैं, जैसे इक्वालिटी का आइडियल, फेयरनेस का, जस्टिस का, कि हम सब बराबर हैं, सब न्याय होना, पूर्ण संस्था होनी चाहिए, समाज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो हमको आइडियल्स को एक मार्गदर्शन की तरह रुक सकते हैं, लेकिन हमको डील तो डिफरेंसेस से करना पड़ेगा, डील तो प्रॉब्लम से करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी होते हुए भी आइडियल नहीं होती, तो हमको उसकी ओर देखना होगा। और अगर हम आइडियल की ओर हमेशा देखते रहेंगे तो फिर कंप्लेंट करते रहते हैं, सिनिक्स बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये जो आइडियल हैं ये भी बदलते रहते हैं। ये जो कंडीशंस हैं ग्रीड, हेट्रेड, डिवीजन की, वही कंडीशन है, कभी अराइज होंगी, कभी सोसाइटी आइडियल होगी थोड़ी बहुत भी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। तो हमेशा ऐसा चलता ही रहेगा, प्रकृति का नियम है। और फिर उदाहरण के रूप में क्या कि हमने आइडियल बना रखे हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है और हम इंसल्ट फील करते हैं, कोई हमको ठीक से नहीं देखता तो ऑफेंड हो जाते हैं, तो फिर हमारी सेंसिटिविटी जो और बढ़ जाती है और हमको और दुख देती है। तो ये सेंसिटिविटी होना हमारे मानव ह्यूमन रेल्म का एक सत्य है, और हम उस सेंसिटिविटी के प्रति भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो सेंसिटिविटी को भी जान सकती है बगैर ऑफेंड हुए। तो जो राग द्वेष मोह है ये भी बदलते रहते हैं, तो उनको भी अपना न माने, जैसे जागे उनको जानेंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरह की बात है, जैसे राग द्वेष भी क्योंकि हम जानते हैं तो वो भी एक जानने की क्षमता का ही पार्ट है, तो वो भी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। जैसे कहा जाता है अभिधम्म में कि वो चेतसिक हैं, वो चित्त है, तो हमेशा उनके साथ चलते हैं। तो वो एक ऐसा है जैसे कि प्योर कॉन्शियसनेस का समुद्र मान लीजिए, और ये जो भी संस्कार हैं ये उसके ऊपर तरंगें उठ रही हैं, और वो हमको तरंगों को अलग नहीं मानना चाहिए, वो उसी का पार्ट है। तो एक तरह से कॉन्शियसनेस के अंदर ही मूवमेंट है, हम उसको उस तरह से देखेंगे, आत्मभाव से नहीं देखेंगे तो कष्ट नहीं होगा। तो फिर हम निरोध की ओर जा सकते हैं, तब हम तृतीय आर्य सत्य का जो निरोध सच है उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी कंडीशन अराइजिंग होती है वो हमें समाप्त भी होती है। तो उनका जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको ट्रू धम्मा कह लो, अनिदर्शन विज्ञान कह लो, प्योर अवेयरनेस कह लो, हमें उसको कोशिश करनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करने की। मैंने कहा कि आप मेरी बात मानिए नहीं, उसको सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए मानिए नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रेरणा देना है कि आप इस डायरेक्शन में सोचिए और इसको अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपने को इसका साक्षात्कार करें। आज सुबह हमने पुण्यानुसति की थी, तो हमने सोचा कि अब बाकी अनुसतियाँ भी एक बार फिर से उनका अभ्यास कर लें, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ और विषम होती जाती हैं, मन को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ न कुछ संबल की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम इतने समतावान नहीं हुए कि कोई भी परिस्थिति हमको बिल्कुल कंपायमान ना करे। और मैं आज देख रहा था उसके गुणों के बारे में, ये जो बुद्धानुसति जैसे आज का चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट बनाए हैं सूत्रों से कि उनके क्या गुण हैं बुद्धानुसति के। तो जैसे मैं एक सूत्र है अंगुत्तर निकाय का, तो उसमें लिखा है रिकलेक्शन ऑफ द बुद्धानुसति जो है, this is one thing that when developed and pursued leads solely to disenchantment, dispassion, cessation,
स्टिलिंग टू डायरेक्ट नॉलेज टू सेल्फ अवेकनिंग टू निब्बाना। तो ये सिर्फ हमको इतना ही नहीं उद्देश्य कि हमारा मन अपलिफ्ट हो, वो अपलिफ्टमेंट के बाद आगे का जो काम हम कर सकते हैं उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो फिर डिसएंचेंटमेंट, डिस्पैशन और निर्वाण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। तो इसलिए इसको हल्के से ना नहीं लेना चाहिए हमको। हम लोग अभी तक तो मैं भी इसको काफ़ी हल्के से ही लेता था अनुसतियों को। तो लगता है कि इसका इतना लाभ तो तुरंत मालूम पड़ता है कि मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, कॉन्फिडेंस आता है। बट उससे भी अधिक जब कॉन्फिडेंस आएगा, प्रसन्न होगा, तो फिर हम आगे हमारी समाधि अपने आप पुष्ट होगी। समाधि होगी तो यथाभूत ज्ञान दर्शनम ठीक होगा, तो फिर प्रज्ञा भी पुष्ट होगी। बेसिकली इस तरह से हम समझ सकते हैं। आइए अब करते हैं आज भी बुद्धानुसति, जैसे आपको याद हो। भगवान की जो हम गुणों को याद करते हैं रोज़, इति पिसो, तो उसी को बोलते हैं और एक एक करके उनको याद रखते हैं। उनके गुणों का विवरण मन में याद लाते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा बोल दूँगा। इति पिसो भगवा अरहं। अरहं उनको याद होगा क्या कहा था हमने। अरहं का मतलब जिसने सारे हरि शत्रुओं का हनन कर लिया है। कौन से शत्रु? राग द्वेष मोह जो है उनका हनन कर दिया है। इस संदर्भ में मैंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग छोटा सा सूत्र देखा आज कि क्या उन्होंने कभी ऐसी बात कही हनन की। तो एक सूत्र है संयुक्त निकाय में, चैतवा सूक्तम। तो सावत्ती में भगवान थे, तो एक देवता, फीमेल देवता आती है भगवान के पास और उनसे पूछती हैं कि आप इतने आराम से कैसे सोते रहते हैं, बड़े सुख से सोते हैं, तो ज़रूर आपने किसी की हत्या की है, ऐसा लगता है। किसी की हत्या की है करके ऐसे लगता है जैसे हत्या करके आराम से सो रहे हैं। तो क्या आपके गौतम क्या ऐसा बता सकते हैं कि कोई कौन से एक चीज़ ऐसी हो जिसकी कि आप हत्या करके को प्रशंसा करते हैं कि इसकी हत्या करना अच्छा है? भगवान क्या उत्तर देते हैं? कोधम छेत्वा सुखम सेति, कोधम छेत्वा न सोचति, कोधस्य विश्वमूलस्य मधुरग्ग देवते, वधम अर्य प्रशंसति तन्हा छेत्वा न सोचति। तो कहते हैं जो तथागत हैं क्रोध को का भेदन करके, क्रोध को मार के सुख से रहते हैं। और क्रोध की वो परिभाषा इतनी सुंदर देते हैं, विश्वमूलस्य मधुरग्गस्य, कि विश्व उसका मूल है लेकिन मीठा ऊपर से मीठा लगता है। उसका वध करना आर्य लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जब हम अरहन कहते हैं कि वो आर्यों का हनन किया, तो मुझे लगा कि एक ऐसा सचमुच में सूत्र भी है जिसमें वो इस तरह की हनन की बात भी करते हैं। पिसो भगवा अरहन। अरहन शब्द का एक और भी अर्थ है, जो अर हो गया, जो वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट हो गया। तो उस सेंस में भी भगवान हम सबके पूजनीय हैं, आदर के योग्य हैं, राग द्वेष मोह से मुक्त। तो ये सब बातें मन में हम भाव से लाते हैं तो प्रेरणा जागती है, इंस्पिरेशन जागती है। फिर अगला क्या है? तिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। तो सम्मा संबुद्धो मतलब जो सम्यक रूप से संबुद्ध हुए, अपने आप अपने एफर्ट से उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजा और मुक्त हुए। तो अपने आप एफर्ट से मुक्ति का मार्ग खोजना कितनी बड़ी बात है, वो कई बार हमको उसका आभास नहीं होता जब हम कमेंटेरियल लिटरेचर से पढ़ते हैं कि किस तरह से कितने कल्पों 50,000 और कुछ इतने असंख्य और इतने कल्पों से 50,000 50 लाख कल्प पूर्व सुमेध पंडित ने एक जो उस समय मुक्त हो सकते थे अपनी मुक्ति को टाल दिया, इसलिए कि मैं भी अनंत प्राणियों को अपने साथ मुक्त करने का प्रण लेता हूँ। और इतने
करोड़ों वर्षों तक करोड़ों जन्म लिए ताकि वो सम्मा संबुद्ध बन सके। तो उस बात को याद करके मन में मोद जागता है, मन में कृतज्ञता जागती है, क्योंकि अगर वो मार्ग न बताते तो हमारे लिए इतना सूक्ष्म मार्ग जान पाना बहुत मुश्किल था, क्या इम्पॉसिबल ही था। क्योंकि हमारे तो क्या इतने परंपराएं हैं सारे विश्व में, कितने लोग हैं जो इस बात को इतनी सूक्ष्मता से समझ पाए हैं जितना भगवान ने समझा है। पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्न। विद्या और आचरण से संपन्न कितने उदाहरण हम देखते हैं, उनके आचरण के सूत्रों में पढ़ते हैं। कितने किस्से, कितने लोग उनके अरहंत बनने के बाद भी, मुक्त होने के बाद भी कितने उनकी जीवन में विषम परिस्थितियाँ आईं और कैसा उनका आचरण हमेशा धर्मानुकूल रहा। तो जो जो सूत्र हमने पढ़े हैं जिनको याद करें मन में, अगर हम उनका सिर्फ स्मरण ही करें तो मन में बड़ी प्रसन्नता जागती है। आप कोशा भारद्वाज सूत्र जैसे सुना है, भारद्वाज ब्राह्मण थे, कैसे चिंचा उनको परेशान करने के लिए आई, उनको लांछन लगाने के लिए आई। कैसे सच्चक का है जो हम जय मंगल अट्ठ गाथा पढ़ते हैं, 8 कहानियाँ उनमें पढ़ते हैं। कैसे नाग क्या उनके ऊपर प्रक्षेप करने की कोशिश हुई, नंदोपनंद नाग का। कैसे नालागिरी एलिफेंट को मस्त करके उसके उनके ऊपर आक्रमण कराया गया। हर परिस्थिति में कौन कौन से बल उन्होंने दिखाए, शांति के, समता के, मैत्री के, और किस तरह से आचरण उनका कभी भी डामाडोल नहीं हुआ, हमेशा धर्मानुकूल आचरण रहा। कितना भी लोगों ने उनको परेशान किया, कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी कुपित नहीं हुए, कभी किसी को श्राप नहीं दिया। तो ये सब बातें याद करके मन में श्रद्धा जागती है, इंस्पिरेशन जागती है कि हम भी थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में प्रयास करें। और विद्या चरण संपन्न, विद्या का तो पुंज थे भगवान। विद्या अर्थात कंप्लीट नॉलेज, तीनों तरह की अभिज्ञाएँ, अपना पूर्वजन, सभी प्राणियों के पूर्वजन, पूर्ण शुद्ध होने का, संस्कार विहीन होने का जन्म, फिर 4 आर्य सत्यों का अन्वेषण, प्रतिच्छ समुत्पाद का अन्वेषण, सारी बातें जो धर्म की मुख्य बातें, धर्म की गूढ़ बातें, सब बातें उनकी गोदी में प्राप्त हुई। सचमुच में विद्या चरण संपन्न सुगतो, मतलब उनकी गति अच्छी थी। एक तो फिजिकल सेंस में कि वो नपे तुलेशक पाँव से सजग होकर चलते थे ग्रेसफुली। कितने सुत आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि दूर से ही देख के भाई आ गया और दूर से ही देख के पहचान गया यही होंगे, क्योंकि कितनी उनकी आभा थी, इतनी सौम्य चाल से वो चल रहे थे, सिर्फ उससे ही देख के पहचान गया। और ऐसे कई सुत आते हैं जिनमें इस तरह का वृतांत आता है उनकी गति का, उनके चलने का। सुगतों का एक और तात्पर्य लिया जाता है कि उनकी गति सदगति हुई। सदगति क्या हो, तो सभी गतियों से पार हो गए, निर्वाण का साक्षात्कार किया। उससे अच्छी तो क्या बात हो सकती है। सुगतो, फिर लोकविदु, लोकविदु लोगों को जानने वाले। फिजिकल को मटेरियलिस्टिक सेंस में सारे लोग जितने भी थे, निरय लोग से लेकर ब्रह्माग्र तक सारे लोग उनको सबको वो देख पाते थे, जान पाते थे। और जैसे कई सुत आते हैं जिसमें वो जाते भी हैं, वहाँ बग ब्रह्मा का साथ सुत है, उनके साथ जाते हैं। और कमेंट्री लिटरेचर में आता है कि वो तुषित लोग गए अपनी माता को अभिधम्म पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से कई दृष्टांत आते हैं। देवता लोग उनके पास आते हैं, उनसे मार्ग समझने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। तो ये सब बातें हमारे हमने सूत्रों में पढ़ी हुई हैं। तो इसीलिए जितना हमने परियत्ति का पाठ किया वो सब बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति में बहुत सहायक होता है।
लोक विदु उस सेंस में, और लोक कहते हैं अपने शरीर को भी, हमारे भीतर को, 5 खंडों को, तो 5 खंडों को भी वो बिल्कुल तार तार करके जानते थे, बाहर के लोक को भी तार तार करके जानते थे, और ये भी जानते थे कि जो बाहर का लोक जिसे हम सचमुच में ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानते हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, वो सब्जेक्टिव इम्प्रेशन है, हमारे मन का खेल है। तो ये बड़ी भारी बात जो किसी बहुत आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक ही उस बात तक पहुंच पाए हैं कि हाँ, जो हम संसार को जिसको हम मानते हैं कि वस्तु स्थिति ऐसी है, सचमुच में संसार कैसा है उसको हम ऑब्जेक्टिवली जान ही नहीं सकते। तो ये बात भगवान ने तब अपनी साधना से देखी, किस तरह से लोग को पहचाने कि लोग जितने भी हैं हम सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, और फिर मन के माध्यम से उनकी एक कंसेप्चुअल पिक्चर बना देते हैं। तो लोकविदु हर मायने में भगवान लोकविदु माने जा सकते हैं। सोइति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। ऐसे अनुपम अद्वितीय सारथी जैसे हो, जो अपने रथ को खूब बिगड़े घोड़ों को चला के रखे, लगाम लगा के रखे, यही उपमा भगवान की दी जाती है कि कोई किसी भी तरह का प्राणी हो, कैसा भी हो, हर एक को उन्होंने साथ दिया, उनको अच्छे मार्ग पर लगा दिया। जैसे कि एक कुशल सारथी बिगड़े घोड़ों को भी लगा देता है, वैसे ही भगवान ने भी सब लोगों को मार्ग पे लगा दिया। और कितने उदाहरण आते हैं हमारे सूत्रों में, हमने पढ़ा कैसे लोग उनसे झगड़ा करने आते थे और सीख के धर्म उनके अनुयायी बन जाते थे। सच्चक की बात उसमें जय मंगल अट्ठगांडा में भी आती है, कोसा भारद्वाज की बात आती है, और भी कितने ब्राह्मण लोग जो उनसे वाद विवाद करने आते थे, चंकी की बात आती है। तो उन सबको अगर हम मन में बात याद करें तो स्पष्ट आता है कि सत्ता देव मनुष्यानम, किस तरह के शास्त्र थे जो देवताओं और मनुष्य अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी को सिखाने में उनके जैसा कोई अनइक्वल्ड था। कि 7 साल का राहुल है, उसको एक तरह की शिक्षा दी जाएगी, 17 साल का जब हुआ तो कुछ और शिक्षा दी जाएगी, 25 साल का हुआ तो कुछ और शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि वो मुक्त हो गया। हर जो भी आया सीखने के लिए उसके लिए उसके उपयुक्त शिक्षा वो देते थे, उस ताकि उसका मन उसी हिसाब से संतुलित हो सके। और इतने सूत्रों में हमने पढ़ा है बाह्यों को किस तरह की शिक्षा दी, मालवीय ने पुख्ता को किस तरह की शिक्षा दी, दिट्ठे दिट्ठ मतम भविष्यति की एक शिक्षा, पॉइजन डरो की एनालॉजी की दूसरी शिक्षा। अच्छा कूता पूछता है कि तथागत मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, तो उसको सिमिली देते हैं आग की। शक का आता है इन देवताओं का राजा कि मुझे संक्षेप में बता दीजिए, तो संवेद धम्मा नालम अभिनिवेश आस्य। बक ब्रह्मा है तो उसको अनिदर्शन विज्ञान की शिक्षा। किस्सा गौतमी बेचारी परेशान है तो उसको सिर्फ बीज मस्टर्ड सीड्स के लिए भेज के उस माध्यम से शिक्षा देते हैं। पटाचारा है बिल्कुल नग्न हो जाती है तो विक्षिप्त हो जाता है मन, किस तरह से उसको प्यार से सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी एबिलिटी थी कि जो भी आए, किसी भी परिस्थिति में आए, मन की कैसी भी विक्षिप्त दशा हो, डल हो, शार्प हो, उसके अनुरूप भगवान उनको शिक्षा दे देते थे। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम। तो बात स्पष्ट हो जाती है, मनुष्यों के, देवताओं के शास्त्र थे, टीचर थे। तो देखिए जब हम देखते हैं कि किन किन को उन्होंने शिक्षा दी, चाहे वो ब्राह्मण हो जो मॉन्क बन गए, सारिपुत्ता, मोगलाना, महाकश्यप जैसे, सुनीता जैसे चंडाल हो, अंगुलीमाल जैसे सीरियल किलर हो, सिहा जैसे जनरल हो आर्मी के,
प्रसेनजीत जैसे राजा हों, अम्बपाली जैसी कोर्टिजन हो, सुप्पबुद्ध जैसा लेपर हो, बक ब्रह्मा जैसा महान ब्रह्मा हो, उनके अपने फैमिली के सदस्य हों, हर प्रकार के विभिन्न तरह के लोग आते और उनको वो उसी हिसाब से शिक्षा दिया करते थे। तो इसलिए जब हम ये रिसाइट करते हैं, इन सब बातें अगर हमारे मन में हों तो ये सारी बातें हमारे को मन में आती हैं और फिर मन में मोद जागता है, प्रसन्नता जागती है, मन प्रफुल्लित होता है, इंस्पिरेशन आती है कि हम भी ऐसे बने। तो एक बार फिर धीरे धीरे ये सारी चैंटिंग में करता हूँ, मन में प्रसन्नता जागेगी, शरीर में भी प्रसन्नता जागेगी, उस तरह की तरंगे शरीर में होती हैं तो देख सकते हैं और मन प्रसन्न हो सकता है। मुदित चित्त में से मन को प्रसन्न होने दें, थोड़ी देर प्रसन्नता का आभास करें और फिर समापन करेंगे। भगवा शब्द की व्याख्या हमने नहीं की। भगवा के कई तरह की व्याख्या की जाती है, भंग रोगो, भंग दोषो, भंग मोहो, एक पुस्तक सेंस में। दूसरी भगवान, जो भगवान के ऐश्वर्य में रहते हैं, जो हमेशा मुक्ति के ऐश्वर्य में रहते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, सारी शक्तियाँ, सारी एबिलिटीज़, महानिधियाँ उनके पास, जो चाहें कर सकें, अपने विभिन्न रूप बना सकते हैं, नाना प्रकार की विधियाँ हैं उनमें, पानी में चलना, इधर जाना, आकाश में, ये तो सब ऐश्वर्य हैं जो कहा जाता है कि महापुरुषों के ऐश्वर्य हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनंतरो पुरुषदं सारथि सत्ता एव मनुष्यानं बन्धो भगवाति। सुबह हमने धज्जा के सूत्र में पढ़ा था कि ये चैंटिंग भय से काम करने में भी मदद करती है। तो अगर हम ये सारी इन बुद्ध धम्म संघ की गुणों को पूरी तरह से याद रखें और बीच बीच में चांट करें तो मन में बड़ा, मन इधर उधर विशृंखलित हो रहा है, उदास हो रहा है, बेचैन हो रहा है, तो अगर हम समझ के, शब्दों का अर्थ समझ के धीरे धीरे उसको याद करें तो मन एकदम स्टेबलाइज हो जाएगा, शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और फिर प्रसन्न चित्त से साधना अच्छी तरह से हो सकती है। साधना करने में जब विक्षेप बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत मन में उथल पुथल मच रही है, कोई गहरा संस्कार फूट पड़ा और साधना नहीं हो पा रही, तो उस समय भी ये बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करके चित्त को शांत कर सकते हैं और फिर साधना शुरू कर सकते हैं। समय नहीं आज ज़्यादा, समापन करते हैं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु
रक्षन्तु सर्व देवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि